Welcome to the Bishop School Pre-Primary Standard Junior KG. Today we will be doing English writing. Children, before we start with our lesson, let us recite a school prayer. So stand in your place, join your hands and close your eyes and recite a school prayer. Children, please repeat the prayer after me. Almighty God, grant grace to the members of this school to be sincere in work, play and prayer, so that teachers and taught learning from each others may become more fit for thy service and the service of their fellows. Yes, children, you may open your eyes and sit down and get back to our lesson. Okay? Hello children, how are you all? Hope you are doing good. Are you studying at home? Yes children. Are you studying with your parents for online studies? Okay. So today what we are going to do? Yes. Today we are going to do English writing. Children, in previous lesson we have already done the small letters S to W. Today we will be doing the next small letters, that is X, Y, Z. So are you ready children? Okay, here we go. Which letter is this children? Small letter X. Small letter X. Repeat after me children. Small letter X. Yes. X for Xmas tree. Repeat after me children. Be little louder. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Yes, very good children. Y. Small letter Y. Small letter Y. Which letter is this children? Small letter Y. Repeat after me. Small letter Y. Y for yo-yo. Yes, it's a toy. Y for yo-yo. Y for yo-yo. Yes. And this is the last letter, Z. Which letter is this? Z. Small letter Z. Repeat after me children. Which letter is this? Z. Small letter Z. Z for zebra. Z for zebra. Repeat after me children. Z for zebra. Yes, very nice children. Children, open your homework book. Let's see in previous lesson what we had done. HW बुक ओपन करो. आपको याद है टीचर ने लास्ट लेसन में क्या करवाया था? यस चिल्ड्रेन. ओके. टीचर हैड शोन हाउ टू राइट A to R इन स्टैंडिंग. टीचर ने आपको सिखाया था ना A-R लिखो ऐसे स्टैंडिंग में. लिखा था आपने? ओके. टीचर हैड ऑल्सो शोन यू हाउ टू राइट STU. VW आपने लिखा था? Okay, very good children. So we will move to the next small letters. That is X, Y, Z. Are you all ready children? Let's start. आपने पेंसिल रबर इरेजर लिया? Okay, start with teacher. टीचर के साथ साथ लिखने चालू करो. So now what we are going to write? Small letter X. What we are going to write? Small letter X. How to write small letter X? From blue line you have to write. From blue line you have to draw one slant line. Okay? Draw a slant line towards your right.
ऐसे राइट में ड्रॉ करो स्लांट लाइन. ब्रिंग द पेंसिल टू द नेक्स्ट ब्लू लाइन. ओके. नाउ अगेन अनदर स्लांट लाइन यू हैव टू ड्रॉ. थोड़ा गैप रखो और एक स्लांट लाइन बनाओ towards your left, cutting the first slant line. ओके. ऐसा क्रॉस लाइन बनाने का. X, small letter X, small letter X. Now you have to write small letter Y. How you going to write small letter Y? Okay. Here see, look. Standing line करो, small standing line blue line पे ही करो. Then take a pencil towards your right hand side. Take the pencil on top. Bring the pencil down towards your down लेके आओ. रेड लाइन दिखाई दे रही है उधर. एंड मेक अ कर्व टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड. ऐसे लेफ्ट के साइड ऐसा कर्व करो. किया आपने? ओके. वाई, स्मॉल लेटर वाई, स्मॉल लेटर वाई. नाउ नेक्स्ट लेटर Z. हाउ यू गोइंग टू राइट स्मॉल लेटर Z? You have to write from blue line. Okay. Draw one sleeping line. एक स्लीपिंग लाइन करो. किया आपने? नाउ वन स्लांट लाइन. स्लांट लाइन करो यहाँ से यहाँ तक की. देन अगेन वन स्लीपिंग लाइन. ओके. Z, स्मॉल लेटर Z, स्मॉल लेटर Z. X, small letter X, X for Xmas tree. Small letter Y, Y for yo-yo. Z, small letter Z, Z for zebra. You're done, children? Finish writing? Now you have to write the full page. Okay? Okay, teacher will show you once again how to write small letter X. Okay? Now draw one slant line. Slant line करो towards your right hand side. किया आपने? Now another slant line towards your left, crossing the first line. Okay, ऐसा क्रॉस करने का. Okay? You're done, children? आता है अभी आपको? चलो टीचर के साथ साथ लिखो. Slant line करो. Another slant line cutting the first slant line. X. Slant line करो. Another slant line cross करो. X, small letter X. One slant line towards your right hand side, one slant line towards your left hand side, crossing the first slant line. Okay? X, small letter X. टीचर के साथ साथ लिखो. With good handwriting. slowly लिखो, अच्छे से लिखो. टीचर के साथ साथ लिखो. Small letter X, small letter X. लिखा आपने? Okay. Now we'll write small letter Y. How to write small letter? Teacher will show you again. One standing line करो, small standing line. First blue line से second blue line तक की. Now take the pencil towards the right hand side. Curve करो ऐसा. Now take the pencil on top. Bring the pencil down to the red line. Red line करो. And now make a curve towards your left hand side. ऐसा pencil घुमाओ, left hand side करो. Y, small letter Y. Okay. Once again teacher will show you how to write. Okay? Pay attention. टीचर के साथ साथ लिखो. स्टैंडिंग लाइन करो. टेक योर पेंसिल टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. टेक द पेंसिल अप. ब्रिंग द पेंसिल डाउन. फिर ऐसा कर्व करो. ओके. वंस अगेन सी. स्टैंडिंग लाइन. मेक अ कर्व. टेक द पेंसिल ऑन टॉप. ब्रिंग द पेंसिल डाउन. रेड लाइन तक की लेके आओ और फिर ऐसा घुमाने का कर्व बनाओ. वाई, स्मॉल लेटर वाई. ओके. वंस अगेन. Take the pencil on top, bring the pencil down to the red line. Now slant, ऐसे slightly turn करो. Curve बनाओ. Y, small letter Y. Okay, once again, take the pencil on top, bring the pencil down and make a curve. Okay, once again, standing line, curve करो. Take the pencil on top, bring the pencil down to the red line. फिर बाद में ऐसा pencil घुमाओ. ऐसे छोटा सा curve करो. ओके. स्मॉल लेटर वाई. ओके. वंस अगेन ब्लू लाइन पे ऐसे स्टैंडिंग लाइन करो. स्मॉल. टेक द पेंसिल ऑन टॉप. ब्रिंग द पेंसिल डाउन टू द रेड लाइन. फिर ऐसा कर्व बनाओ. वाई, स्मॉल लेटर वाई, स्मॉल लेटर वाई. ओके. नाउ जेड,
small letter Z. How to write small letter Z? Slipping line towards your right hand side. Now cross line करो, एक slant line करो इस side. Then again slipping line. Okay, pencil उठाने का नहीं. Don't lift your pencil up. Okay, once again slipping line. Now again make one slant line to the left hand side. ऐसा slant line लेके आओ. Then same pencil you have to take towards your right hand side. एक slipping line वापस से बनाने का. Okay. Z, small letter Z. See how teachers writing? Small letter Z. Small letter Z. Slipping line. वापस से एक slant line. Then वापस से one slipping line. Small letter Z. Small letter Z. टीचर के साथ साथ लिखो. Write with good handwriting. ऐसे slipping line. फिर वापस से slant line. फिर वापस से slipping line. Okay. Z. Small letter Z. Okay. Now X. Small letter X. Small letter Y. And small letter Z. Okay. Small letter X. Small letter Y. And small letter Z. X for Xmas tree. Y for yo-yo. Z for zebra. Okay. Now again write X. Y. Small letter Y. And small letter Z. लिखा आपने? Finish writing children? Okay. One last time. Last line पे लिखो अभी वापस से एक टाइम और. X. Slant line करो. Another slant line. Crossing the first slant line. Okay. Y. Small standing line करो. Take the pencil on top. Bring the pencil down to the red line. फिर ऐसा curve करो. Y. Small letter Y. Z. Slipping line. One slant line. Again slipping line. Z. Small letter Z. You finish children writing? X, Y, Z. Small letter X. X for Xmas tree. Y. Small letter Y. Y for yo-yo. Small letter Z. Z for zebra. You are done children? आपने लिखा है ऐसा? Okay. Now teacher will show you how to write A to Z in standing. आपने ऐसा पेज टर्न किया? Take the next page children. टीचर के साथ साथ लिखो. The first line you have to write A dash Z. आपने लिखा है ऐसा? A dash Z. Teacher is going to show how to write A to Z in standing. Okay? Write with teacher only. टीचर के साथ साथ लिखो. फर्स्ट लाइन पे लिखो A dash Z. फिर सेकेंड लाइन पे ऐसे डॉट डालो. स्मॉल डॉट ब्लू लाइन पे डाला आपने. बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लाइन. फर्स्ट लाइन पे A dash Z. A to Z लिखने का. और देन सेकेंड लाइन स्टार्ट राइटिंग स्मॉल लेटर A. लिखा आपने स्मॉल लेटर A. देन B, C, D, E, F, G. Write slowly and neatly children. Write with teacher only. टीचर के साथ साथ लिखो. E, F, G, H. लिखा आपने? ओके. रीड फ्रॉम आप. रीड करो वापस से वंस अगेन. A, B, C, D, E, F, G, H. What comes next? I, J, K, L. Finish writing children? Okay. Now next letter M. Where you are going to write M? On top you have to write इधर सेंटर में M. Small letter M. लिखा आपने? What comes next? Small letter N. O, P. Finish writing? Okay. Read once again. See whether you have written properly or no. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. What comes next?
Small letter Q. Then small letter R. Finish writing, children. MNOP QR. लिखा आपने MNOPQR. Okay, what comes next? Small letter S. Then T. How teacher showed you write? How to write T? Standing line करने का, turn करो ऐसा, and one sleeping line करने का, between red and blue line इधर. किया आपने? Now U. Small letter U. Next, small letter V. W. लास्ट टाइम आपने किया था ना, STUVW. अभी स्टैंडिंग में लिखने का उसको, STUVW. ना X. टीचर ने बताया ना अभी X कैसे लिखते हैं, X. ना Y and Z. We are going to write Y and Z. इधर लिखते Y, small letter Y. Take the pencil on top, bring the pencil down and slant curve करो Y. Now Z, small letter Z. Okay? Finish, children. A dash Z. क्या लिखना है आपको? A dash Z. फिर स्मॉल लेटर A चालू करना है. A B C D E F G H I J K L. Next letter M. N O P Q R. What comes next? R के बाद क्या आता है? S T U V W X. Then next letter Y and Z. So you are done with A to Z. टीचर ने अभी आपको बताया ना A to Z कैसे लिखते हैं. Only you have to keep in your mind how to write T. T कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन करने का, रेड लाइन टू ब्लू लाइन, कर्व करने का, एंड वन स्लीपिंग लाइन बिटवीन रेड एंड ब्लू लाइन में एक स्लैंट लाइन करने का, T. ओके, यू आर डन चिल्ड्रेन. फिनिश राइटिंग. So parents, today your child has to do only 2 pages. One page X, Y, Z and the other page A to Z in standing. आपको आज सिर्फ 2 pages ही करना है. One page X, Y, Z और दूसरी पेज A to Z. Okay? Tell your child to write directly in homework book. So today we have completed with the small letters A to Z. Children, now you have learned how to write A to Z. So keep practicing small letters A to Z at home. In next session, we are going to start with capital letters and even 2-letter words. So go, lo, no. आज टीचर ने आपको क्या करवाया, क्या सिखाया है? स्मॉल लेटर्स A to Z. आपको क्या करना है? स्मॉल लेटर्स A to Z प्रैक्टिस करना है. ओके चिल्ड्रेन, अभी स्मॉल लेटर्स फिनिश हो गए हैं. नेक्स्ट टाइम टीचर आपको कैपिटल लेटर सिखाएगी और 2-letter वर्ड्स भी. सो वी आर डन फॉर टुडे. थैंक यू पेरेंट्स. थैंक यू चिल्ड्रेन. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. बाय. टेक केयर.